डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस पेपर और यू कैन आल्सो दिस इज ए सैंपल पेपर, सो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू मे हैव इन योर एग्जाम, स्पेशली इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, so let's see what the no kind of questions we can have। तो जो पहला क्वेश्चन है तो उसमें ये पूछा गया है, सो बेसिकली एक्सप्लेन giving reason so why carbon neither form C4 plus nor C4 minus anions but form covalent bonds which are no bad conductor of electricity and have low melting point and low boiling point। ठीक है, तो इसमें ऐसा है से ये जो कार्बन का जो कंपाउंड है ये क्यू आयनिक नहीं होता है और क्यू कोवलेंट बनता है। और हमको पता है इसके कोवलेंट होने से ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये चेंज होता है। तो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जो है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वो देखते हैं। सो बेसिकली एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सो बेसिकली के एल, सो बेसिकली दिस इज योर 2 and 4। तो इसमें क्या आएगा, सो इन द आउटर मोस्ट सेल हमारे पास नो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें आयनिक कंपाउंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो आइदर इसको 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा और नहीं है तो बेसिकली इट हैज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन और इट हैज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड बोथ द प्रोसेस, सो बेसिकली टू फॉर्म like a C4 minus or C4 plus or C4 minus, C4 minus, so both this process, no, for this process you need very high energy। okay, so that you have to provide from outside। तो बाहर से कोई एनर्जी मतलब बहुत एनर्जी देने के बाद ही ये 4 प्लस और 4 माइनस बन सकता है, जिसके लिए क्या होगा, सो बेसिकली इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये दिस विल लाइक ए बिहेव्स लाइक ए इनर्ट गैस, inert gas configuration, तब भी ये नो इट विल फॉर्म ए आयनिक बॉन्ड। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सो बिकॉज इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी, तो इसलिए नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, सो बेसिकली दिस फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, सो बेसिकली बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय अदर 4 एलिमेंट। तो जैसे मीथेन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सो बेसिकली वी आर हैविंग नो 4 हाइड्रोजन नो अराउंड 1 कार्बन एटम। तो इसमें क्या होता है, सो बेसिकली वी आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या होता है, सो बेसिकली दैट फॉर्म बॉन्ड एंड ऑल आर इन ऑक्टेट स्टेट। ऑक्टेट स्टेट स्पेशली फॉर नो कार्बन इट गॉट ऑक्टेट स्टेट, इसका बाहर का जो वैलेंस सेल का ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। और ये जो हाइड्रोजन है, सो बेसिकली दिस इज नॉट ऑक्टेट बट दिस इज ए no, pretty much similar inert configuration like a helium like configuration, so which is also inert। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, so basically all the elements here are in a no, octet state, so basically this is what we call the octet state। okay, to reach the octet state यहाँ पे क्या होता है, so basically covalent bond formation होता है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सो बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों को पता है क्यों क्यों बैड कंडक्टर होता है, सो बेसिकली फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हम क्या जरूरत है, आइदर इलेक्ट्रॉन जरूरत है इन सॉलिड स्टेट और इन द सॉल्यूशन वी नीड आयन। ओके, आयंस और आयंस। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड और कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं, सो बेसिकली कार्बन का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कोई भी अदर एलिमेंट के साथ, एक और सी हाइड्रोजन और सी ऑक्सीजन, तो ये जितना सारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सो बेसिकली दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ, स्ट्रॉन्ग एंड दे डू नॉट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता है, तो बेसिकली दे डू नॉट फॉर्म द आयन, सो आयन फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल इन सॉल्यूशन। तो इसलिए क्या होता है, सो आयन सॉल्यूशन में आयनिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, यहाँ पे होता है, सो बेसिकली वो हेल्प करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आयन नहीं है तो इसलिए नहीं हो पाते हैं। लेकिन इन द सॉलिड स्टेट, सो अगेन ऑल इलेक्ट्रॉन आर नो बिजी और ऑक्युपाइड टू फॉर्म ए बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, तो उसमें वहाँ पे भी सॉलिड स्टेट में भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं।
तो उसके जो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए क्या होता है, सो बेसिकली हम लोग को पता है, सो बेसिकली आयोनिक कंपाउंड दे आर हैविंग हाई नो हाई melting point and high boiling point. So since this is a ionic compound, since ये जो कार्बन का जो है ये कोवलेंट कंपाउंड होता है, सो बेसिकली कार्बन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, तो इसीलिए क्या होता है, सो नो along among the molecules, so basically if you again if you think about like a C2H6 C2H4, ये जो दोनों है, so basically you can consider, so even though they are gas, like if you think the higher molecule जैसे N-butane और C4 C4 C4H10 जैसा होता है, सो बेसिकली दिस इज लिक्विड, तो इसमें क्या होता है, सो द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लो, तो इसीलिए उसमें क्या होता है, सो बेसिकली लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, व्हेयरएज आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, सो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो इसीलिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड along with their atomic number in the present in the parentheses are given below। ये जो ये पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट है इसमें दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि अरेंज देम इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन द पीरियोडिक टेबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट हैज ए लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल ये जो एलिमेंट है इसको अरेंज करना है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे है अरेंज हुआ है एलिमेंट्स, सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर, तो हमारा जो इसमें जो एलिमेंट्स दिया गया है तो उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है, तो बेसिकली वी कैन अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा, सो बेसिकली दिस विल बी द लिथियम विल बी द फर्स्ट एंड दिस देन वी आर हैविंग बेरिलियम देन बोरॉन, ओके। सो बोरॉन के बाद कार्बन, सो उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आएगा ऑक्सीजन and then fluorine। So now you can start like the 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the atomic numbers. So this is the way, so we can arrange them in the periodic table, because periodic table according to modern periodic table क्या होता है, so element are arranged according to their atomic number, okay। So the second question is which element has a largest and smallest atom? So again, if we think about, so if you see atomic number, this is also no, all the elements present in a same period यहाँ पे बता दिया है। So basically this क्या होता है second period element, तो ये एक same period में है, इसमें क्या होगा, so basically if we go from left side to right side, तो उसका एटॉमिक नो साइज और रेडियस क्या होगा, सो बेसिकली सो दैट विल डिक्रीज, सो दिस विल डिक्रीज द एटॉमिक साइज। तो इसमें क्या होगा, सो बेसिकली लिथियम दिस विल हैव द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट एटम, दिस विल बी द लार्जेस्ट एटम, और जो फ्लोरीन वो क्या होगा, सो बेसिकली द स्मॉलेस्ट एटम, ठीक है। बिकॉज वी नो इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो इसमें क्या होगा, सो एटॉम का जो साइज है वो बेसिकली एलिमेंट का जो साइज है वो डिक्रीज करेगा, और इफ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम वहाँ पे क्या होगा, सो इंक्रीज द साइज, ओके, ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। तो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन। So given below are some elements in the modern periodic table। So इसमें कुछ elements दिया गया है। Select the elements that has one electron in the outermost shell, or the right electronic configuration, and select the two elements that belong to the same group and give reason your answer। तो जो the third question है,
तो इसमें क्या है, सिलेक्ट टू एलिमेंट्स that belong to the same period, which one of the two has biggest size. ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है, पहले ये जो एलिमेंट है, सो ये देख लेते हैं. सो फर्स्ट विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके बाद सबको जो जितना सारे जो क्वेश्चन है उसका आसानी से हो जाएगा, आई होप. तो उसमें देखते हैं. सो बेरिलियम जो है, सो बेरिलियम इज एटॉमिक नंबर इज 4. देन उसके बाद क्या है, फ्लोरीन है, उसका जो एटॉमिक नंबर है 9. एंड देन सिलिकॉन, ये जो है 14. और नो पोटाशियम, this is your 19. And then calcium we are having 20. जो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, सो बेसिकली इन द फॉर द बेरिलियम, सो इन द फर्स्ट सेल वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, देन द रेस्ट दिस विल बी 2 2. ओके, सो वी आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या है, सो बेसिकली इन द फर्स्ट सेल we'll have 2 electron, and then second cell we are having 7 electron. Okay, and for this case we'll have a 2 electron, then in the second cell it can have like 8 electron. तो उसके बाद, so basically we are having the 6 electron, sorry, 4 electron in the outermost cell. Okay, so this is the electronic configuration for the silicon. And then for potassium, this will be like a 2 first. In the first cell will be 2, then again 8 and 8. So this will be the 1. Okay, so in the for this is for again this will be the pretty much same. Then the outermost cell we will have like this 2 2 2. Okay, so these are the respective electronic configuration for the elements that is given here. Okay, so इसमें क्या बताया गया है, select the element that has 1 electron in the outermost cell. ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से जो दिखाई दे रहा है, तो किसका बाहर का जो सेल में एक है, सो बेसिकली दैट इज योर पोटाशियम. सो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, पोटाशियम का जो आउटर मोस्ट सेल में नो you are having 1 electron, and write its electronic configuration. Electronic configuration से ये देख already no we did it. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट 2 एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू द सेम ग्रुप एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो उसमें क्या होता है, सो बेसिकली दिस फॉर दिस नो क्वेश्चन वी नो if the elements have same electronic configuration for outermost cell, same electronic configuration at outermost cell, तो उसका क्या है, सेम ग्रुप में आएगा. सो अगेन इफ यू सी ऑल दिस, सो बेसिकली दिस इज बेरिलियम एंड द कैल्शियम, सो दे आर हैविंग आउटर मोस्ट सेल, क्या कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो बेरिलियम एंड कैल्शियम, सो बेसिकली they are in the same group. So if you remember, so basically beryllium, magnesium and calcium, they belongs to the same group. तो यहाँ पे क्या पूछा गया, so basically beryllium and calcium, so they belong to the same group. Okay, then select 2 elements that belong to the same period, which one. So अभी क्या पूछा गया, so 2 elements जो same period में है, तो जो सेम पीरियड में कौन है, तो ये कैसे पता चलेगा. सो बेसिकली अगेन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल में, सो बेसिकली फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, तो इसमें क्या है, सो बेसिकली दिस इज वी आर हैविंग इन द सेकंड सेल, एंड दिस इज फॉर आल्सो दिस इज सेकंड सेल, but for this it is third cell, and this is you are having no fourth, this is also we are having fourth cell. तो ये जो दोनों है, सो बेसिकली फोर्थ सेल मींस इट इज फोर्थ पीरियड, और थर्ड सेल में इसमें है, सो दिस इज फॉर थर्ड पीरियड, और ये जो दोनों है, सो बेसिकली दे आर फॉर second period, this will be third period, और this two will be fourth period. ठीक है. सो जो आउटर मोस्ट द आउटर मोस्ट वैलेंस सेल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीरियड. ओके, तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है, सो बेसिकली दिस इज योर 2, सो दिस विल बी द बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड, नो, एंड दिस 2 विल हैव द सेकंड पीरियड, द फोर्थ पीरियड. तो ये जो है दो, सो बेसिकली वी आर हैविंग 2
group. So one is beryllium and the fluorine, or एक है so basically the calcium and potassium. So again, if we draw like this, so basically beryllium, and then we are having fluorine, and then we are having uh, potassium and calcium. तो ये जो लेफ्ट साइड में जो रहता है तो उसका साइज बिगेस्ट होता है, और राइट साइड में जो रहता है वो स्मॉल होता है. सो ऑलरेडी प्रीवियसली वी डिस्कस. तो इसका जो बड़ा साइज होगा तो बेरिलियम का होगा एंड पोटेशियम का होगा इन द अदर एलिमेंट, और जो छोटा होगा सो बेसिकली द फ्लोरीन एंड कैल्शियम, दे विल हैव नो स्मॉल साइज रिलेटिव टू द फर्स्ट एटम. I hope you understand this, and this is very important for competitive exam as well as your board exam. So this kind of questions you can expect. Okay, so basically the element का जो atomic number दिया गया है, तो उसका जो periodic table में उसका position कौन सा period में है, कौन सा group में है, ये बहुत important questions है. जो अगला जो क्वेश्चन है, सो बेसिकली दिस इज नो और क्वेश्चन. सो बेसिकली वी आर हैविंग टू क्वेश्चंस, एंड नो ऑफ कोर्स दे आर हैविंग आल्सो द पार्ट क्वेश्चन. तो आइदर और, तो पहले क्वेश्चन हम देखते हैं. So write the name and structure of saturated compound in which carbon atoms are arranged in a ring. Ring basically इसमें ring है और क्या है, saturated compound है. So basically we will have the saturated no compound of carbon which is in the ring form. Okay, so we know, so mostly we learn about the aliphatic, so which is CnH2n plus 2 hai. So basically this is a open chain for open chain. But if we do for a ring, so basically the most the familiar and frequently the stable जो कार्बन का कंपाउंड है वो है साइक्लोहेक्सेन. सो साइक्लोहेक्सेन. ओके, सो साइक्लोहेक्सेन इसका मतलब है, सो बेसिकली साइक्लो मींस इट इज अ रिंग एंड हेक्सेन मींस हेक्स इज रूट वर्ड. सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर, इट इज लाइक द साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, साइक्लोहेक्सेन. सो इफ वी डू द ओपन चेन स्ट्रक्चर, सो बेसिकली दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे होता है. सो वी आर हैविंग 6 कार्बन, और ये जो वैलेंसी पूरा करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, सो बेसिकली दिस इज और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सो 2 हाइड्रोजन चाहिए. ओके, so as we discussed, so basically when first we have to draw the carbon carbon bond, then the rest of the valency we have to fill up with the hydrogen. तो ऐसे ही ये है साइक्लोहेक्सेन. तो इसमें क्या है, so basically we are having 6 कार्बन, इसका जो स्ट्रक्चर आएगा, so basically 6 और क्या है, हाइड्रोजन कितना आएगा, so basically this is like a 12. Okay, and this is a confusion, like again in the competitive exam. So basically you can get a question. So basically the general formula, even the general formula of the alkane is CnH2n plus 2, but if this is also saturated hydrocarbon, but its formula is C6H12, इसका मतलब है CnH2n. So but generally if we know basically Cn, this is a general formula of the alkene. But यहाँ पे क्या होता है, because of the cyclic structure, so basically this is exceptional, you can remember. So basically which no the hydrocarbon or which saturated hydrocarbon having general no or the formula like this CnH2n or no C6H12. Okay, तो ये है cyclohexane. Okay, so then give the number of the single bond present in this compound. तो यहाँ पे कितना सिंगल बॉन्ड है तो वो हम काउंट कर सकते हैं. सो बेसिकली हियर फॉर cyclo this cyclic structure we are having 1 2 3 4 5 6 bonds, and each carbon having bonded with the 2 hydrogen. So basically this will be 6 into 2 is 12 plus 1 into 6. So basically this will be total 18 bond, single bond, or to be more specific, this will be the 18 single bond. Okay, so let's see the next questions. Next questions क्या है.
So basically, what would be the electron dot structure of these compounds, carbon dioxide, ethene, and ethanol? तो इसमें पहले क्या नो जरूरी है. So basically, this is important to know. So basically, in the carbon we are having 4 electron in the valence shell. Okay, and oxygen का कितना है? So basically, in oxygen, in case of oxygen, it is having 6 electron in the valence shell. 6 electron in the valence shell. Okay, and the hydrogen we are having 1 electron. Now we have to fill up the octet state. तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है सी वो बता दिया गया है. तो पहले कार्बन एंड ऑक्सीजन ड्रॉ कर लेते हैं. सो बेसिकली दिस इज इफ यू ड्रॉ. सो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन. ओके, और ये जो है सो बेसिकली दिस कार्बन नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू नो फिल अप द ऑक्टेट स्टेट. और जो ऑक्सीजन को कितना चाहिए? सो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो यहाँ पे क्या है? सो बेसिकली इफ दे इच oxygen, if they share 2 electron with the carbon, so they can form a covalent bond and they can have like octet state, complete octet state. So if you do like this, so then क्या हो रहा है? So basically now carbon is in octet state. उसके साथ साथ क्या है? So basically oxygen is having another no 4 no electron. So that can be like this. Okay, so that is why we draw the structure like this. So this is like a C double bond O. तो क्योंकि यहाँ पे जो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, सो बेसिकली वी आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन. तो इसमें दो बॉन्ड आएगा. सो वन इज पाई बॉन्ड, वन इज सिग्मा बॉन्ड. तो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ कितना है टोटल? सो बेसिकली वी आर हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड. सो ये इन दिस मॉलिक्यूल, बट ईच विथ ईच कार्बन, ईच नो कार्बन एंड ऑक्सीजन वी आर हैविंग 1 सिग्मा एंड 1 पाई. ठीक है. तो उसके बाद है इथीन. इथीन का मतलब है यहाँ पे सी सी डबल बॉन्ड है. सो बेसिकली इथीन का जो स्ट्रक्चर है, सो बेसिकली दिस इज C2H4 है. C2H4 है, इसका मतलब है सो बेसिकली द फर्स्ट इट इज हैविंग नो द कार्बन. it can do like each carbon they can form two bond with the hydrogen. so this is a covalent bond. और इसके भी ऐसा है. so basically this is like now we are having 4 electron. now carbon के पास 2 electron है each carbon. so basically again if they share with each other, so basically they will form this is no, it will have a complete octet state. so each carbon will have octet state. Sorry, this is the octet state and this will be the another octet state for this one. And this is how we can write in general form. so basically this will be our the structure of the ethene. Okay, and then ethanol. so ethanol का जो structure है वो C2H5OH OH. ठीक है. तो इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे ही हम ड्रा करेंगे. सो बेसिकली अगेन वी सॉरी इसमें ऐसे ड्रा करते हैं. सो बेसिकली दिस इज लाइक ए this is C, and then we are having no O, and in O again it can form bond with the hydrogen. We can have two lone pair, and then so basically this can have another sorry hydrogen, and this is will be the hydrogen. And now this will be the electron from hydrogen. Now we can see, so basically all the carbons, so basically they are in octet state, 8 electron, and for this carbon also they are having octet state. Okay, and for the oxygen also 4, and this is no in the octet state. And for hydrogen, so they are having like a helium gas, the helium inert gas configuration. So all these elements are in the octet state, and this we can write like this. So basically this is the expand structure like this, CH3, this is CH2, and then OH. Okay, so these are the the structure, electron dot structure. The frequently they ask in the exam, in even the competitive exam, and these are the questions we discuss. And I hope सब ये सब समझ में आया. And
Hope it will be helpful for your exam, and thank you for your kind attention.